me that he's put in an incredible system in his car. 7.5 लाख का सिस्टम है जो वर्ल्ड में पहली बार आया हुआ है, पहला प्रोडक्ट है और किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया. ये 30 लाख प्लस जाता है. यस, यू हर्ड इट राइट, 30 लाख प्लस. Good evening friends, here we are back and this video is completely on demand. We have a lot of questions asking about show us some budget installs. So today we have Maruti Suzuki IGNIS. We have some budget install in this. The client requirement was he required a component setup, he required an amplifier, he required a woofer. But all over this, he also required a digital signal processor, which fits everything into his budget. First, I'll explain you what speakers and what products we are installing in this car. Surprisingly, we are using the J series of Alpine J series components, 161CS, and coaxials are 161C2. These are the entry-level speakers, but much better than the other entry-level speakers available in the market. So we are using the J series speakers, and I'm showing you one product which is off late introduced by Alpine PXE 640E. This is a digital signal processor, surprisingly a small budget processor with an inbuilt amplifier. This is a 6-channel processor. It has 4-channel amplification built in. So our 4 speakers are completely assured about the amplifier. So the amplifier in this take care of the 4 front 2 component speakers and 2 rear speakers. We did first thing making an SQ car. First thing we did complete door damping of the cars, followed by installation of the front components. We'll show you bits and pieces of some videos that we have taken. The complete door damping. The water guards, you can see the rear coaxial speakers being installed, front components installed. This is being like the client had a specific budget, so we have to go for a Audiblex woofer, which is a 8 inches decent woofer, gives a good adequate kind of bass inside the car. Rear we have installed coaxials. अब इनकी रिक्वायरमेंट थी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की. कहते हैं कि हमें पूरा एकदम क्लीन साउंड चाहिए इस कार के अंदर. तो और क्लीन करने के लिए जो आगे के 2 ट्वीटर और 2 स्पीकर्स मैंने लगाए हैं, उसको मैंने कम्प्लीटली एक्टिव प्ले कर दिए, तो हम अपने हिसाब से उनको ट्यून कर सकते हैं. उनकी रिक्वायरमेंट भी यही थी. तो एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि ये जो पर्टिकुलर DSP है, ये प्लेबैक करता है 48 किलोहर्ट्ज़ 24 बिट. काफी बढ़िया प्रोडक्ट है एंड बहुत ही रीजनेबल बजट में आया हुआ है. इस पर्टिकुलर DSP के अंदर आपको हर स्पीकर को अलग से ट्यून करने की फैसिलिटी दी हुई है. इसमें जैसे जो हाई एंड DSPs हैं अल्पाइन के, उसी बेस पे, उसी इंजीनियरिंग पे, उसी सॉफ्टवेयर पे ये DSP बना हुआ है. मैं आपको एक ग्लिम्स भी दूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, किस प्रकार ये सॉफ्टवेयर है. 15 बैंड इक्वलाइजेशन है, पैरामेट्रिक भी है, ग्राफिक भी है. बजट प्रोसेसर है, फिर भी इसके अंदर सारे क्रॉसओवर्स हैं, बेसल्स हैं, बटरवर्थ हैं, लिंक्विड से सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. कट ऑफ्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, टाइम करेक्शन के ऑप्शंस हैं आपके पास. तो बेसिकली सारा कुछ जो एक मॉडरेट टू हाई एंड DSP के अंदर अल्पाइन ने दिया हुआ है, उन्होंने इस एंट्री लेवल के अंदर दे दिया आपको. एक स्मॉल आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो ये एंट्री लेवल DSP में दिया हुआ है. अगर आप होम में जाके देखेंगे तो मेन सोर्स सिलेक्शन हाई लेवल भी है और ब्लूटूथ भी है, प्लस इसमें प्रीसेट मोड्स हैं, 6 प्रीसेट मोड्स हैं. अगर आप देखेंगे इसमें प्रॉपर टाइम करेक्शन का दिया हुआ है. आप इसको बेटर इमेजिंग के लिए टाइम करेक्शन इसमें डाल सकते हैं. हम लोग जाते हैं इक्वलाइजेशन में. अगर आप देखेंगे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 सारी इक्वलाइजेशन से, एंड अकॉर्डिंगली एज पर द कस्टमर टेस्ट हम उसको सेट करके दे सकते हैं कस्टमर को. आप यहाँ पे देखिए सारे क्रॉस ओवर फिल्टर्स दिए हुए हैं.
लिंक फिट्स है, बटरवर्थ है, बेसल्स है। कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सेट करके दे सकते हैं। फिर आप इसको होम में जाके प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। बजट कंस्ट्रेंट है और डीएसपी भी इंस्टॉल करना है, कंपोनेंट्स भी बजट वाले चाहिए, तो जे सीरीज सेलेक्ट किया गया है। जे सीरीज क्यों सेलेक्ट किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग के अंदर, कि इवन सच एन एंट्री लेवल स्पीकर हैज सच ब्यूटीफुल फीचर्स। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। These are the J series component speakers by Alpine. It has a fantastic characteristic. If you see, you can check the frequency response 30 Hz to 30 kHz and sensitivity at 90 dB. So requires very less power to play, and it's in budget a very good speaker. Similar parameters are for the rear coaxial speakers. Yeah, you can see that. The digital signal processor, the newly launched by Alpine. I've explained you a brief about the features. At a closer look, you can see the MRP of the components, 6199. The coaxial MRP is 3999 and the DSP is priced at 26,999. कुछ फ्यू सॉन्ग्स का मैं आपको एक टेस्ट भी दे देता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये बजट सिस्टम जो हमने बनाया इस कार के अंदर, हाउ इज इट साउंडिंग। Soundtrack the test, 1 2 check. Check. Similarly, we'll be trying to get more and more new ideas introduced to you. क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स म्यूजिक के, कार ऑडियो के लिए। Stay tuned. Thank you.